जाने भाषा में है लिखा। कोरे नैनों पे कोई प्रिंट करके आ। सिंपल, ठीक है। इधर देखिए, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये तो होमवर्क दे देना चाहिए वैसे। प्रिंट द गिवन पैटर्न। अब मैं नंबर ट्राइंगल प्रिंट करूंगा, फिर अगला अल्फ़ाबेट ट्राइंगल। भाई सेम कहानी है, स्टार का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर, अल्फ़ाबेट का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेम है। अब इस ट्राइंगल को कैसे प्रिंट करेंगे, अगेन ये आपको यार होमवर्क ही दूंगा मैं। देखिए, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये तो होमवर्क दे देना चाहिए वैसे। प्रिंट द गिवन पैटर्न। अब मैं नंबर ट्राइंगल प्रिंट करूंगा, फिर अगला अल्फ़ाबेट ट्राइंगल। भाई सेम कहानी है, स्टार का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर, अल्फ़ाबेट का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेम है। अब इस ट्राइंगल को कैसे प्रिंट करेंगे, अगेन ये आपको यार होमवर्क ही दूंगा मैं।
So if you're looking out for a structured DS algo course, Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So in this lecture, we'll be learning about time complexity, and this is the continuation of Striver's A to Z DSA course slash sheet. So if you remember in the previous video, we have covered all of these green tick mark things. And in this video, we'll be covering the time complexity. Learn basics and then analyze the next steps. What does that mean? I'll be teaching you the basics of time complexity, what is time complexity, how to compute time complexity, and all the terms related to it. And then eventually, when you go through all the later steps at every problem that we solve, we will be discussing time complexity of every problem in depth. So eventually, when you complete all the steps or all the problems, you will have a very, very good hold on the time complexity part. Now, in this video, I cannot teach you time complexity of very complex codes because you do not know them, right? So once you learn the complex codes and recursion, backtracking, we will be discussing time complexity in depth over here. But as of now, just let's start with the basics. So the first question, what is time complexity? Now, why is time complexity required first of all? Now, whenever you're going to an interview, you might end up writing a piece of code, right? Now that code, how does an interviewer judge that code? This is where they will analyze the time complexity of the code. Now they're not going to take your code, run into a machine and see how much time does the machine take, and on the basis of that tell you that your code is right or wrong. That is not going to happen. This is where something like time complexity comes in. Whatever code you're going to write in an interview, in every interview, they're going to analyze you what is the time complexity and what is the space complexity. And then on the basis of that, you will be judged, right? So whenever you write a code that might end up taking, let's say, 2 seconds on a machine, or might end up taking 3 seconds on a machine, might end up taking 5 seconds on a machine. So the time taken, will you call it the time complexity? No. You will never call time complexity as time taken. Now you might ask, but why? If a code is taking certain time, that should be its time complexity. Let's give you a very, very easy example to explain why not. Imagine I take this code, this can be any code, any code. I take this code and I run it on two machines. One is the old Windows machine and the other one is the new MacBook machine. Now, I am sure the old Windows, hypothetically, might end up taking
2 seconds to run that code. While the new MacBook, which is a lot more in terms of the lot more latest in terms of the configuration, might end up taking 1 second. So does it mean that your code is taking 1 second, or does it mean that your code is taking 2 seconds? It might happen. I bring up some other machine the next day. It might end up taking lesser than 1 second. So depending on the system, the code ends up taking a different time. So that is why time complexity cannot be said as time taken, because it is dependent on system. It is dependent on configuration, right? So this is why this is the first point. Time taken is never equal to time taken, never ever. So you might ask, if time complexity is not time taken, then what is it? That is where I see the definition. The rate, remember, the rate at which the time taken increases, the rate at which the time taken increases with respect to the input, with respect to the input size rather. So what does it mean? Let's explain this with the help of a graph. So again, let's take the same example where I'm saying I have a old Windows machine and I have a new MacBook. Okay. Now imagine you're giving the old Windows a size 10, just as hypothetical, a size 10 input size, and I'm plotting the graph. And this is 1 second, this is 2 seconds, this is 3 seconds, this is 4 seconds, this is 5 seconds. This is 10 input size, 20, 30, 40. At 10 input size, it might end up taking 2 seconds. At 20, it might end up taking 4. And I'm plotting the graph. And this is 1 second, this is 2 seconds, this is 3 seconds, this is 4 seconds, this is 5 seconds. This is 10 input size, 20, 30, 40. At 10 input size, it might end up taking 2 seconds. At 20, it might end up taking 4. At 30, it might end up taking 6, which will be here. So you see the time increasing at some theta angle, like it's increasing at a certain slope. So this theta angle is what you call as the rate of increase. This is what you call the rate of increase. Okay, now let's take the new MacBook. So if I take the new MacBook, the 10 might end up taking 1 second, the 20 might end up taking 2 seconds, the 40 might end up taking 3 seconds. So it's here, here, here.
So this is the rate. And this theta is the rate for the new MacBook. So I can say the rate at which it increases time is what you call as time complexity. Depending on the input, if they're giving you more input, it might end up taking a certain more time. So the rate at which the time increases is what is generically referred as time complexity of any given code. The next question that might come to your brain is, okay, Striver, if we are saying the time complexity is not computed in terms of seconds or minutes, then how do we write it? This is where something like a big O notation comes in. Now, in all the interviews that you're going to give, or in all the examinations, if you're writing a piece of code, they will ask you to analyze the time complexity. That is when you do not, like, you will not say 2 seconds. No, you will say it in terms of big O notation. Every piece of code takes time in terms of big O notation. What is big O notation? I'll just give you a prime example. So it's like a capital O, open parenthesis, and a close parenthesis. This is what big O notation is. And inside it, you write whatever the time is taken. Inside is, you write the time taken or the hypothetical time, which I'll show you how to compute. Let's take a very, very small example to compute the time complexity of a certain code. So imagine I write the for loop. I've already taught you loops in the previous video. I equal to 1, I lesser than 5, I plus plus, and then I write C out and my name Raj. Okay. So can you tell me what is the big O of this? This is nothing but the number of steps that this code will take. First step is very short, assigning. The second step is comparison. The third step is printing, right? And then you come across, and this is your fourth step. And then again you check, this is your fifth step. And then again you print, this is your sixth step. So this is how every step is computed. So whatever is the total number of steps, that is what you write inside it. And that is what you call as the prime big O notation. But you cannot just keep on counting step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7. That is insane. You just cannot keep on manually counting the steps. This is where 3 rules come in, and I'll write the rules. The 3 rules are very simple. Always compute time complexity in terms of worst case scenario. Time complexity to be computed in terms of worst case scenario. Why worst case? I'll explain you. The next one is avoid constants. Avoid constants. And the third is avoid lower values. So if I have to compute the time complexity or the big O of this piece of code, let's look at it on a very higher level. Can I say this for loop is running for 5 times? I can. At every time, what is happening? It's like increment, check, print, increment, check, print. So can I say for every time it's operating twice, for every time it is operating 3 times, increment, check, print, 5 into 3, can I say this? I can. So can I say a total of 15 times? That is how you write it. You write it as big O of 15 is what you write. And this is time complexity. It runs for 15 times. But this is a number. This is a number. You generally do not represent your code in terms of numbers. Okay. So let's change this. Now, can I say this? If I change just a minute. If I probably will change this to lesser than n, lesser than equal to n. So now can you say how many times will this loop run? I know one thing. This is going to run for big O of n times. The code will run for n times, n iteration. And at every iteration, 1, 2, 3 things will happen. So at every iteration, 3 things will happen. Pretty obvious. This is what
will be the time complexity. Big O of 3n. Big O of 3n will be your time complexity. So whenever you're saying big O, you go to the code and you see how many times it is running. And then you write big O of 3n as your time complexity. Does that make sense? It does, right? Okay, let's now come back to the 3 points that I've written. Always compute time complexity in terms of worst case scenario. Now there are 3 things. One is the best case, one is the average case, and the other one is the worst case. Now let's take a snippet of the code and explain you what is best case, what is average case, and what is worst case. Okay, so this is the snippet of the code. Now imagine the snippet of the code is very simple. It states if marks is lesser than 25, print grade D. It states if marks is less than 45, print grade C. If marks is lesser than 65, then you go ahead and print grade B. Or else you go ahead and print grade A. So let's talk about the best case scenario. What is best case? When the program takes the least amount of time. So over here, can I say, if someone gives you an input of marks equal to, let's say 10, what will happen? This will execute it and grade D will be printed. And none of these lines will be executed. None of these lines. So can I say the number of operations will be just one, a check and a print, which is like 2 operations. Can I say that? Imagine if I give you marks equal to 70. So at marks 10, it was big O of 2 operations. Correct? Big O of 2 operations. Now if I give you marks equal to 70, what will happen? Check, false, check, false, check, false. It comes here. 3 and then 4. Can I say 4 operations were here? Like 1, 2, 3 and then goes to else. Somewhere around 4 operations. So it takes 4 operations. So whenever you're analyzing the time complexity, will you say that my code runs in big O of, or will you say that your code runs in big O of 4? Obviously, you will say big O of 4 because that might be the worst case that the computer might encounter when it is given an input. So always, yes, always compute the time complexity in terms of worst case scenario. And if they will ask you the best case, you know the best case. Whatever is the best case, like in this case, is the first if statement getting executed, which is big O of 2 operations. So you've got an idea about the best case and the worst case. You know what is average case. There's nothing but the best plus worst divided by 2. It's the median of it. So pretty self-explanatory. Why? If I give you a question, why do we compute it in terms of worst case? The answer is again self-explanatory. If you're building a system, will you build it for 1 person or will you build it for 1 million person? If given an option, you will say 1 million because you want to build a system which can scale up. You always think of the worst that can happen. That is why when I talk about time complexity, your code's extreme worst case is what is considered while computing time complexity. Now, let's talk about constants. I'm saying avoid constants. Why am I saying that? Why? For the best case and the worst case. Whatever is the best case, like in this case, is the first if statement getting executed, which is big O of 2 operations. So you've got an idea about the best case and the worst case. You know what is average case. There's nothing but the best plus worst divided by 2. It's the median of it. So pretty self-explanatory. Why? If I give you a question, why do we compute it in terms of worst case? The answer is again self-explanatory. If you're building a system, will you build it for 1 person or will you build it for 1 million person? If given an option, you will say 1 million because you want to build a system which can scale up. You always think of the worst that can happen. That is why when I talk about time complexity, your code's extreme worst case is what is considered while computing time complexity. Now, let's talk about constants. I'm saying avoid constants. Why am I saying that?
Let's take a shuttle example. Let's take something like 4n cube, something like 3n square plus 8. Let's take this. So over here, 4n cube plus 3n square plus 8. These are the number of operations that your code is taking. Hypothetically, I do not know the piece of code. I'm just taking an hypothetical BGO expression. Now, imagine if I tell you that the input size n is somewhere around 10 to the power 5, right? I'm saying 10 to the power 5 is the input size. So when I say 10 to the power 5 and you put that in, what will it be? 10 to the power 15, 10 to the power 5 cube, 15 plus 3n square, that's 3 10 to the power 10 plus 8. Tell me a very easy thing. 10 to the power 15 plus 10 to the power 10 into plus 8. Will this 8 have any significance in the operations? This is in itself such a huge number. If you add 8, will it matter to them? They're taking like billion, like whatever is 10 to the power 15, I'm not sure what it is. It's like billion, trillion, whatever, like more than that, I guess. With that, a plus 8, does it have a significance? It doesn't. If you're earning 1 million and I give you $1, that will not have any significance. That is why we do not consider constants. Now, in terms of code, imagine I say you something like this: int x equal to 2. So this is the modified code. X equal to 2 and then the for loop. So this is one operation. It's something like n into 3 plus 1. The time complexity updated will be n into 3 plus 1 operation. And this is the one operation. So you never ever take this unit operation. So you will not consider this. You will say no. It will still stay as n into 3. I will avoid constants because whenever the input size is very large, those constants have very less significance. Got it? Now let's take the next thing. Avoid lower values. Let's take the same example. I'm saying 10 to the power 15. 10 to the power 15. If you add 10 to the power 10 to it, will it have any significance? It won't. So adding 10 to the power 10 to 10 to the power 15, 10 to the power 15 will have absolutely no significance. It is similar to saying I will add, let's say, 1 to 1000. Even lesser than that. It is similar to actually saying 1 to, yeah, I'm adding 1 to this much, or 1 more 0. Yeah. Will it have any significance? No. So adding this one to this one, will it have any significance? No. The number of operations will be like slightly more. Because 10 to the power 15 in itself is such a huge number. But this is why, again, something very important. Avoid the lower values, which does not change its significance by much. So avoid lower values. Got it? So these are the 3 points that you will always keep in mind while computing the BGO notation, because BGO notation is what you will be expressing your code in interviews always. All the problems that I'll be solving, I'll be telling you about BGO notation only. Apart from BGO notation, there are certain other terms like theta notation, omega notation, and you'll find a lot of other terms in textbooks. Are they required in interviews? No.
no one is going to ask you these things. No one. But just for knowledge, let me tell you, the BIGO notation is always the highest complexity or the worst case complexity. Remember this. Worst case complexity or the highest, or generically known as the upper bound complexity. It's known as the upper bound. The omega is the lower bound. As I said, the kind of the best case is the lower bound or the lowest bound or whatever you can. And this is nothing but the average complexity. Just a quick disclaimer. There are a lot of theoretical stuffs revolving around BIGO, theta, omega, a lot of limit derivations. But I am not teaching you theory stuff. I'm not teaching you for your semester examinations. I am teaching you for interviews. I am preparing you for the DSA coding rounds, and they will not be asking it. Over there, they'll be asking you programming logic. You'll have to solve problems. They won't be asking you, tell the formula for BIGO notation in limit terms. No one is going to ask. Might be asked in semesters. For that, you'll find different teachers on YouTube. If you're learning from me, you're learning for interviews, for coding rounds, for problem solving abilities, not for your semester exam. So please do not comment that you did not teach the mathematical derivation, because that is something which is not required while problem solving, right? So you know how to compute BIGO now. Let's do one thing. Let's quickly solve the derivation, because that is something by much. So avoid lower values, correct? So these are the 3 points that you will always keep. Starting from zero and हाय एवरीवन, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यूज कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप जावा के अंदर कोड करते हैं, सी++ के अंदर करते हैं, पाइथन के अंदर करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं, बिल्कुल भी लैंग्वेज स्पेसिफिक हमारा लेक्चर नहीं होने वाला। इसके अंदर सारी की सारी जो डिस्कशन है वो हम कंसेप्चुअली करेंगे जो हर लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डीएसए के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लेते हैं, पर जब हम एक्चुअली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे वो सारी थ्योरी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फिट इन करती है। तो वही चीज एक्चुअली आज के सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक तरीके से रिवीजन करेंगे। तो अगर आपको ऑलरेडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आता है तो फिर भी हम इस रिवीजन को देख सकते हैं। अगर आपने आज तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं सीखा है तो भी इस रिवीजन को हम देख सकते हैं ताकि हम जान सकें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली वर्क कैसे करती है जब हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। एंड फिर सेकंड सेक्शन के अंदर हम जान रहे होंगे कि कैसे जो हमारी टीसी की नॉलेज है वो हमें हेल्प करती है जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाते हैं। क्योंकि कई बार जब हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए तो उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स को देखकर हम एक्चुअली गेस कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या इस क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन के साथ। हम बात करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्जैक्टली होती है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर टाइम वर्ड आता है तो कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे गेस करते हैं कि क्या पता जो हम कोड लिखते हैं, जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं, क्या पता ये उसका रन टाइम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब, बट ये एक्चुअली बहुत गलत गेस है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई कैन राइट इट हियर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट इक्वल टू द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम। यानी हो सकता है कि आपने कोई सिंपल सा कोड है, वो कोई फॉर लूप भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वही सिंपल सा कोड अगर आप लीड कोड के ऊपर सबमिट करेंगे और वही कोड जाकर आप कोड फोर्सेस के ऊपर सबमिट करेंगे या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करेंगे तो सेम एल्गोरिथम के लिए, सेम कोड के लिए आपको डिफरेंट एग्जीक्यूशन टाइम मिल सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि सेम कोड आप किसी मैक मशीन के अंदर रन करें और सेम कोड किसी विंडोज मशीन के अंदर रन करें और सेम कोड को किसी लिनक्स मशीन के अंदर रन करें, तब भी हो सकता है उस सेम कोड एंड सेम एल्गोरिथम के लिए आपको डिफरेंट रन टाइम मिले। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं हम एक्चुअल टाइम टेकन की बात नहीं करते। यानी हम ये बात नहीं करते कि 1 सेकंड लगेगा या 100 मिलीसेकंड्स लगेंगे या 400 मिलीसेकंड्स लगेंगे या 500 मिलीसेकंड्स लगेंगे। हम एक रिलेशन की बात करते हैं, हम एक बिहेवियर की बात करते हैं। और एक रिलेशन बिहेवियर क्या होता है वो अभी हम धीरे-धीरे जान रहे होंगे। पर सबसे पहले तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हो सकता है आपके और आपके दोस्त ने सेम कोड लिखा हो पर डिफरेंट मशीन पे रन करे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर रन करे तो आपका कोड डिफरेंट टाइम में एग्जीक्यूट बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जो एक्चुअल रन टाइम होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि लीड कोड ने अलग सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस रख रखे हैं, कोड फोर्सेस के अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, किसी और कोडिंग प्लेटफॉर्म के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें डिफरेंट टाइम टेकन मिल सकता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्जैक्टली है क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बिहेवियर है या इसको कह सकते हैं एक फंक्शन है। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताता है कि कोई भी कोड है उसके अंदर जो भी इनपुट आ रहा है वो इनपुट कैसे उस कोड के नंबर ऑफ ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है। मतलब अगर हमने कोई भी सिंपल सा एल्गोरिथम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय सिंपल एल्गोरिथम, एक फॉर लूप भी हो सकता है, इसके अंदर कोई ना कोई इनपुट तो आ रहा होगा। कोई इनपुट हमारा एक एरे भी हो सकता है, ये इनपुट हो सकता है कोई मैप हो, ये इनपुट हो सकता है कोई स्ट्रिंग हो या ये कुछ और इनपुट भी हो सकता है। जो भी इनपुट
है उसका साइज वेरी कर सकता है। यानी अगर हम सिंपल एरे का एग्जांपल लें तो एरे तो एक सिंगल एलिमेंट का भी हो सकता है, एरे 5 एलिमेंट्स का भी हो सकता है, एरे 10 मिलियन एलिमेंट्स का भी हो सकता है। तो ये जो एरे का साइज है या जो इनपुट का साइज है वो कैसे इस कोड के नंबर ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाएगा, डिक्रीज करेगा, कैसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस चेंज होंगे बेस्ड अपॉन दिस इनपुट साइज। सो दिस इज द बिहेवियर, दिस इज द फंक्शन जो हमारे एल्गोरिथम से निकल के आएगा। कई सारी बुक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन के लिए इसे ऐसे भी बताया जाता है कि कैसे इनपुट साइज के बढ़ने पर हमारे एल्गोरिथम कितना टाइम लेगी, वो कैसे बढ़ रहा है, किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, उसे हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक फॉर लूप अपने किसी एरे के लिए। फॉर लूप के अंदर लेट्स सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 0 से हम अपने एरे के साइज n तक जा रहे हैं और हम हर बार i++ कर रहे हैं और हर बार हम क्या प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने एरे का ith एलिमेंट। ये मैंने सिंपल सा एक फॉर लूप लिखा है। अब क्या मैं कह सकती हूं कि जब मेरे एरे का जो इनपुट साइज है दैट इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम पर मेरे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि मेरा लूप रन ही नहीं करेगा तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी नहीं होंगे। तो यहां पे 0/0 का एक मुझे पॉइंट मिलेगा कि जब मेरा इनपुट साइज 0 है तब मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी 0 हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कोड के अंदर, या 0 नहीं तो हो सकता है किसी केस में हमारे पास सिंपल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो, दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म हो, इस तरीके का कुछ मेरे पास पॉइंट निकल के आ सकता है। अब अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरे एरे की जो लेंथ है दिस लेंथ n अगर ये 100 के बराबर है तो ओवरऑल मेरा ये लूप कितनी बार रन करेगा, मेरा लूप भी करीबन 100 बार रन करेगा। तो क्या मैं अज्यूम कर सकती हूं अराउंड 100 ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यहां पे जब मेरा इनपुट साइज लेट्स सपोज यहां पे 100 आता है तो यहां पे करीबन 100 ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो मेरे ग्राफ में कुछ यहां पे दिखाई देगा कि जब इनपुट साइज 100 है तो ऑपरेशंस भी 100 के करीबन होने वाले हैं। और अगर वहीं को कल को ये n इंक्रीज होकर हो गया 10,000 के इक्वल, तो हो सकता है मेरा 10,000 कुछ यहां पर लाई करता हूं। अब ये बिल्कुल स्केल वाला ग्राफ नहीं है, बहुत अजम्पशन के साथ चीजें चल रही हैं। तो यहीं पर करीबन मेरा 10,000 वाला पॉइंट लाई करेगा और ये मीट कहां पर होंगे ग्राफ के अंदर, ये कुछ यहां पर मीट हो रहे होंगे। उसके बाद हो सकता है कल को मेरा n इंक्रीज होकर इट बिकम्स 10 मिलियन। 10 मिलियन वैसे तो इस ग्राफ में बहुत आगे होगा पर अजम्पशन के लिए मैं इसे यहां लगा देती हूं। तो ये भी जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा कुछ यहां पर होगा। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इन सारे पॉइंट्स को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन लेकर जाते हैं तो ये क्या होता है, दिस बिहेवियर दिस फंक्शन इज एक्चुअली माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये कैसे इनपुट साइज इंक्रीज हुआ तो मेरे इस पर्टिकुलर कोड के नंबर ऑफ ऑपरेशंस किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुए, इस बिहेवियर के साथ इंक्रीज हुए। और ये जो बिहेवियर है ये मेरा एक लीनियर बिहेवियर कहलाता है। ये एक पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं और इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बिग ऑफ n के साथ। तो कई बार आपने बिग ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी होगी, उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर ग्राफ बनाया जाए तो इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई हमें दिखाई देती है। और ये जो ग्राफ है मैथमेटिकली दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x, यानी जैसे जैसे हमारे इनपुट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहे होंगे। तो यहां से हमारा कांसेप्ट निकल के आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कि कैसे इनपुट साइज के बढ़ने के साथ हमारी नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज होते हैं। अब जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखना चाहते हैं, यहां पे जैसे मैंने बिग ओ लिखा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखने के अलग-अलग तरीके होते हैं। इन सारे तरीकों को हम नोटेशंस कहते हैं। इफ आई राइट इट हियर हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस होती हैं। हमने डिफरेंट नोटेशंस पढ़ी होंगी थ्योरेटिकली, एक ओमेगा नोटेशन होती है, एक थीटा नोटेशन होती है, पर प्रैक्टिकली हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नोटेशन होती है दैट इज कॉल्ड बिग ओ बिकॉज इट्स लिटरली अ बिग ओ। बिग ओ नोटेशन बताता है कि हमारा वर्स्ट केस क्या होगा, मतलब हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल दिमाग में आ सकता है कि नोटेशन क्या होती है। नोटेशन इज बेसिकली सिंबल, किसी चीज को दिखाने का तरीका। मैं कैसे दिखाऊं कि मेरे पास $1 है तो मैं क्या करूंगी, डॉलर नोटेशन को यूज करूंगी। मैं कैसे दिखाऊं कि मेरे पास ₹1 है तो मैं क्या करूंगी, रुपी नोटेशन को यूज करूंगी। तो नोटेशन कुछ नहीं होता, नोटेशन बस एक सिंबल होता है, चीज को दिखाने का तरीका होता है। और ऐसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारे पास डिफरेंट नोटेशन है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोटेशन हमारे पास बिगो आ गई है और बिगो नोटेशन इज इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि हमारे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे बड़ी वैल्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक तरफ आपको दूं 10 रुपीस और दूसरी तरफ मैंने आपके लिए रख दिए 10 करोड़ रुपए, तो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऑब्वियसली जो वैल्यू साइज में बड़ी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए। तो वैसे ही जब भी हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो बिगो नोटेशन सबसे बड़ी वैल्यू हमें देता है और वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसके ऊपर 10 यूजर्स आते हैं और दूसरी वेबसाइट है जिसके ऊपर 1 बिलियन यूजर्स आते हैं या 10 मिलियन यूजर्स आते हैं, तो कौन सी वेबसाइट ज्यादा स्टेबल होगी। ऑब्वियसली सेकंड वाली वेबसाइट ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि ज्यादा लोड ले सकती है, इसे ज्यादा स्केलेबल बनाया गया है, ज्यादा यूजर्स को ये कैटर कर सकती है। तो मतलब इसकी एल्गोरिथम इसका सिस्टम काफी अच्छे से डिजाइन है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा वर्स्ट केस के हिसाब से सोचते हैं। हम ये सोचकर अपनी कोई भी वेबसाइट या कोई भी सिस्टम नहीं बनाते कि हमारे पास 10 यूजर आ रहे होंगे, 100 यूजर आ रहे होंगे। हम हमेशा इस तरीके से अपने सिस्टम्स को बनाते हैं कि हमारे पास 10 मिलियन यूजर्स आएंगे, हमारे पास 1 बिलियन यूजर्स आएंगे। वो एक्चुअली स्ट्रांग सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रोल ऐसे प्ले करता है कि जिन भी एल्गोरिथम्स को हम यूज करें वो ठीक है बेस्ट केस सिनेरियो में तो वर्क कर जाएंगे, एवरेज में भी वर्क कर जाएंगे, पर क्या वो वर्स्ट केस सिनेरियो को विथस्टैंड कर पाएंगी। तो उसके लिए हम अपना मेजर जो रखते हैं प्रैक्टिकल सारे केसेस के अंदर वो होता है हमारे बिग ओ का। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं और हमसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है तो हमसे जनरली बिग ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है। और जब भी हमें अपनी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी होती है, हम किसी कोडिंग टेस्ट के अंदर बैठे हैं तब भी हम बिग ओ को ही कैलकुलेट करते हैं बिकॉज़ प्रैक्टिकली दिस इज यूज्ड द मोस्ट। तो हम इसी को लेकर मतलब बिग ओ को ही बेस बना के अपने आगे के सारे डिस्कशन करेंगे। अब अभी हमने जाना कि हमारा जो इनपुट एंड ऑपरेशन के बीच का फंक्शन है, जो रिलेशन है, उसी को हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी एनी मैथमेटिकल फंक्शन। मैथ के अंदर फंक्शन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैथ की अगर बात करें तो मैथ के अंदर हम जनरली देखते थे fx इज इक्वल टू, अगर मैंने n स्क्वायर लिख दिया ये क्या है, एक फंक्शन है। अगर मैंने लिख दिया fx इज इक्वल टू 5n क्यूब प्लस 2 टू द पावर n ये क्या है, ये एक फंक्शन है। तो मैथ का कोई भी फंक्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन सकता है। पर जनरली अगर हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं तो हम इनमें से हमेशा सबसे बड़ा एक्सप्रेशन लेते हैं। तो यही रीजन है कि जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर की जाती है हम कांस्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं और सबसे वर्स्ट वैल्यू को हम लेके आते हैं। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो को ध्यान में रखना है। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी जाती है, मेरे पास एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n क्यूब या इसे 5n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 52, इस तरीके की अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी जाती है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को हटाएंगे। क्योंकि जब हम 1 बिलियन 10 मिलियन इतनी बड़ी वैल्यूज के बारे में सोच रहे हैं तो ये छोटे छोटे कांस्टेंट्स हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई चेंज नहीं लाने वाले, इसलिए हम हमेशा कांस्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी चीज हम क्या इग्नोर करेंगे, हमारे पास जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज हैं हम उनमें से वर्स्ट वैल्यू निकालते हैं। अब n क्यूब प्रैक्टिकली हमेशा n स्क्वायर से बड़ा होगा और n स्क्वायर हमेशा इस वैल्यू से बड़ा होगा। तो क्या मैं कह सकती हूं इस n स्क्वायर को और इस चीज को हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n क्यूब। तो जब भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इस तरीके का सवाल दिया जाता है उसके अंदर कांस्टेंट्स को इग्नोर करना है, छोटी वैल्यूज को इग्नोर करना है और हमेशा बड़ी वैल्यू के ऊपर फोकस करना है क्योंकि वही हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है, उनके दिमाग में डाउट आता है कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सीखते हैं हमें ऐसे काफी सारे फॉर्मूले दिखाए जाते हैं, तो क्या मुझे भी अपने कोड के ऐसे फॉर्मूले लिखने होंगे। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर आपने डीएसए के 50 to 70 क्वेश्चंस कर लिए और आपको ऑलरेडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की नॉलेज है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद आप लिटरली अपने कोड को पढ़ के अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को गेस कर पाएंगे दिमाग के अंदर ही, हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ये जो लूप है सिंपल सा लूप है, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, कोई ऑपरेशंस नहीं करने पड़ रहे देखने के लिए कि मेरा ये जो लूप है ये बिग ऑफ n का है क्योंकि n टाइम्स रन करेगा। तो जब हम एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस
सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप लिटरली अपने कोड को देखकर बता पाएंगे कि इसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है और कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खराब है, कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो शुरुआत में 1-2 दिन हो सकता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थियोरेटिकली सीखने के लिए हम इस तरीके की इक्वेशंस को देख रहे हो, इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, पर प्रैक्टिकली इंटरव्यूज के अंदर बैठकर कोई इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर रहा होता। जनरली हम एक अंदाजा लगा के अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर सकते हैं, बट वो फेज हमारा तब आएगा जब हम इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब अपने पुराने डिस्कशन पे आ जाते हैं। हमने बात कर ली कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली अ फंक्शन। अब मैथ के अंदर तो फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ भी हो सकती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आ सकती हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है जो हमें ज्यादा देखने को मिलती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो हम एक एक करके उन पर्टिकुलर वैल्यूज को और डिटेल में समझने वाले हैं। अब हमने बात की थी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली अ फंक्शन। तो फंक्शन की तो कोई भी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं जो एक मैथ वाले फंक्शन की हो सकती हैं। वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या एल्गोरिथम लिखा हुआ है। बट प्रैक्टिकली जब हम डीएसए के सवाल सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऐसी होती हैं, जैसे बिग ऑफ 1 हो गया, बिग ऑफ n हो गया, बिग ऑफ log n हो गया, जो हमें बार बार देखने को मिलती है। तो अगर इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की वैल्यूज को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारे लिए बाकी एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी वैल्यूज को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर सबसे पहली जो हमें काफी कॉमन कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है विच इज कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमने पहली बात की थी कि कांस्टेंट्स को हम इग्नोर करते हैं, पर एक कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट ऐसा जिसे हम इग्नोर नहीं करते, दैट इज बिग ऑफ 1, यानी ये 1 वाला कांस्टेंट। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब है कि आपका इनपुट साइज चाहे कुछ भी हो, आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस एल्गोरिथम में उतने ही लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन के अंदर हम कोई एरे है जिसको इनपुट ले रहे हैं, और कोड के अंदर यानी फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। अब यहां पर चाहे हमारे एरे का साइज 10 हो, चाहे हमारे एरे का साइज 10 मिलियन हो, क्या हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हर बार फंक्शन को क्या करना है, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, विच इज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या हो गई, ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि आपके एरे के साइज के ऊपर आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस डिपेंड नहीं करते, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका ग्राफ कैसा दिखाई देता है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जब भी हम जनरली ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी इस तरीके का ग्राफ इस कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज बिग ऑफ 1। ये थोड़ा सा वर्टिकली ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द नंबर ऑफ कांस्टेंट ऑपरेशंस, बट जनरली जब भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखे, दैट इज अ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब प्रैक्टिकली कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, जब भी हम किसी एरे की बात करें। अगर मुझे एरे के अंदर पता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मुझे ऑलरेडी इंडेक्स पता है, मुझे ऑलरेडी एरे का नाम पता है, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये कांस्टेंट यानी बिग ऑफ 1 का ऑपरेशन है, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी पता है, बस उस एड्रेस पे जाना है और वैल्यू को लेके आना है। तो चाहे एरे का साइज 10 हो, चाहे एरे का साइज 10 मिलियन हो, अगर मैं 0th इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स पे जाके वैल्यू को एक्सेस करना चाह रही हूँ तो दैट इज अ कांस्टेंट ऑपरेशन, मुझे ऑलरेडी इंडेक्स पता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फॉर्म करती हैं। सेकेंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज बिग ऑफ n। अब बिग ऑफ n का ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रॉ करके देख चुके हैं कि इस तरीके की अगर स्ट्रेट लाइन निकलती है तो इसे हम बिग ऑफ n कह देते हैं, जहां पे जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहे हैं। अब लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, जैसे ही हम सारे के सारे एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए या स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए एक लूप लगाते हैं, तो जैसे जैसे स्ट्रिंग का साइज बढ़ेगा या एरे का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी इंक्रीज होंगे। तो ये हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लीनियर सर्च के अंदर भी देखने को मिलती है। जैसे अगर मेरे पास एक एरे है और एरे के अंदर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके, फॉर एग्जांपल आई हैव सम वैल्यूज, और मुझे किसी वैल्यू 3 को जाके ढूंढना है, तो अगर मैं इसके ऊपर एक लीनियर सर्च लगाऊं, यानी मैं एक एक करके सारे इंडाइसेस पर जाकर देख रही हूं, तो मेरी जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि अगर मैं सारे इंडेक्स पे जा रही हूं तो वर्स्ट केस में मैं पूरे के पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रही हूं, और अगर मेरे एरे का साइज यहाँ पर 5 के इक्वल है, तो अगर 5 साइज का इनपुट है तो मतलब मैंने 5 ऑपरेशंस लगाए। अगर 1 मिलियन
मेरे एरे का साइज होगा तो मतलब मैं 1 मिलियन ऑपरेशंस लगा रही होंगी और इनका ग्राफ कैसा दिखेगा, इनका ग्राफ जनरली एक स्ट्रेट लाइन मुझे दिखाई देगा. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब अगर मेरे पास कोई भी ऐसा कोड होता है जिसमें एक तो मैंने लूप लगा रखा है, एक जगह मैंने बिग ऑफ एन का लूप लगा रखा है और दूसरी जगह मैं कोई कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ कुछ भी नॉर्मल सी वैल्यू प्रिंट करने का, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए यहां पर मैं इस कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर दूंगी जब भी मैं फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रही हूं. क्यों? क्योंकि हमारे लिए वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस ये है कि ये लूप बड़ा होगा, कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. तो जब हमारे पास मल्टीपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं एक सिंगल कोड के अंदर, तब हम छोटी कॉम्प्लेक्सिटीज को इग्नोर करते हैं और हमेशा सबसे बड़ी वाली कॉम्प्लेक्सिटी को लेते हैं. और दोनों केसेस में हमें कैसे पता चलेगा बड़े वाली कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है? हम एन के लिए वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं बहुत बड़ी, यानी कोई बड़ी सी वैल्यू अज्यूम कर लो 10 to the power 6, 10 to the power 7, काफ़ी 10 मिलियन, 1 बिलियन, इस तरीके की बड़ी वैल्यू अज्यूम कर लो. हम n को कभी भी छोटा अज्यूम नहीं करते, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 5, ऐसे करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी कैलकुलेट नहीं करनी. n को हमेशा बड़ा इमेजिन करना है. तो यहाँ पे n जब बड़ा होगा तो मतलब यहाँ पे तो 1 बिलियन हो जाएगा n, और 1 हमेशा 1 ही रहेगा. तो मतलब ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी है एज कंपेयर टू दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होती जाती है वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खराब होती जाती है, क्योंकि जितनी भी बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मतलब बड़े इनपुट साइज के लिए कोड ज़्यादा टाइम लेगा, जितना ज़्यादा टाइम लेगा कोड उतना ज़्यादा वो कम एफिशिएंट है. तो बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो किसी भी केस में बिग ऑफ 1 वाला कोड हमेशा बेटर होगा बिग ऑफ n वाले कोड से. इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी बिग ऑफ n स्क्वायर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर. बिग ऑफ n स्क्वायर को जनरली हम क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं. बिग ऑफ n स्क्वायर जनरली हमें नेस्टेड लूप्स के अंदर मिलता है. मतलब मैंने एक फॉर लूप लगा दिया और फॉर लूप के अंदर मैंने एक और फॉर लूप लगा दिया. ये क्या हो गई? ये नेस्टिंग हो गई. नेस्टिंग के अंदर जनरली 2 बार लूप रन करता है और दोनों बार अगर n टाइम रन कर रहा है तो हमारे पास n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. या फिर अगर हम किसी मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल लें, मुझे अगर कोई 2D एरे दिया हुआ है जिसके अंदर इस तरीके से मेरा साइज है, लेट्स सपोज आई हैव क्रिएटेड एन एरे ऑफ n बाय n. तो अगर इस 2D एरे को या इस मैट्रिक्स को मुझे पूरा ट्रवर्स करना है तो पहले n टाइम करेंगे, फिर दोबारा n टाइम करेंगे, फिर यहाँ पर भी n टाइम, यहाँ पर भी n टाइम. तो टोटल कितने टाइम्स लगेंगे, टोटल कितने ऑपरेशंस लगेंगे पूरे को ट्रवर्स करने के लिए? मुझे लगेंगे n मल्टीप्लाइड बाय n ऑपरेशंस विच इज इक्वल टू n स्क्वायर. तो जब भी किसी मैट्रिक्स को मुझे पूरा का पूरा ट्रैवल करना होता है तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ n स्क्वायर के इक्वल, या फिर नेस्टेड लूप्स के अंदर आती है कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर के इक्वल. अब मेरी जो बिग ऑफ n स्क्वायर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जनरली उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरीके का ग्राफ बना सकते हैं. दिस इज बिग ऑफ n स्क्वायर. तो जैसे जैसे ग्राफ में हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं ना, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खराब होती जाती है. नीचे की तरफ कांस्टेंट है मतलब अच्छा है, लीनियर है मतलब थोड़ा सा कम अच्छा है, और n स्क्वायर है मतलब अब हम खराब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते जा रहे हैं. फोर्थ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें कई बार देखने को मिलती है दैट इज लॉग n. अब लॉग n देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि लॉग क्या आ गया, हमने तो मैथ के अंदर पढ़ा था लॉगरिदम, हम तो कोडिंग करने आए थे, हम मैथ क्यों पढ़ रहे हैं? बट इफ आई टेल यू जेन्युइनली लॉग n इज योर फ्रेंड, क्योंकि लॉग n बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब भी हम प्रैक्टिकली एल्गोरिदम्स लिखने जाते हैं. लॉग n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इसीलिए जब भी आपके कोड में हमें log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखे, या अगर हम n से log n में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो मतलब हमारा कोड बहुत सुंदर होता जा रहा है. अब log n का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में? अब log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली हमें देखने को मिलती है बाइनरी सर्च के अंदर. जब भी हम बाइनरी सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड दिस एरे, और इस एरे के अंदर बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और मुझे बाइनरी सर्च करके 5 को फाइंड आउट करना है. तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है? हम अपने सॉर्टेड एरे के अंदर पहले मिड निकाल लेंगे, फिर देखेंगे जिस भी टारगेट को मुझे फाइंड आउट करना है क्या ये मेरे मिड से बड़ा है या छोटा है या उसके इक्वल है. अब मुझे पता चल रहा है मेरे मिड से मेरा टारगेट बड़ा है, मतलब अब मेरा एरे हाफ हो गया. इस पूरे एरे को अब हम इग्नोर कर सकते हैं. अब मुझे बस राइट हाफ के अंदर अपने टारगेट को सर्च करना है. तो एक ही आइटरेशन में मेरा इनपुट साइज हाफ हो गया, तो इस पूरे एरे को अब हम इग्नोर कर सकते हैं. अब सेकंड हाफ में आ जाते हैं. सेकंड हाफ में मिड निकालेंगे, लेट्स सपोज हमारा मिड 4 आता है. अब दोबारा से 4 को 5 से कंपेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे 4 से बड़ा है मेरा टारगेट. तो यहाँ पर भी इस एरे के अंदर हम लेफ्ट पार्ट को कंप्लीटली हटा देंगे, तो दोबारा से मेरा इनपुट साइज हाफ हो गया. और फाइनली इसे अगर हमने हटा दिया तो हम इस लास्ट एरे से जब हम अपने टारगेट को कंपेयर करेंगे तो हमारा टारगेट हमें मिल गया और यहाँ पर हमारा बाइनरी सर्च कंप्लीट हो गया. तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है कि हर एक आइटरेशन के अंदर हम अपने इनपुट साइज को हाफ करते चले जाते हैं. इट बेसिकली मीन्स कि अगर हमने एक एरे के साथ स्टार्ट किया और एरे के अंदर
अभी एरे का साइज है 100 के इक्वल, तो नेक्स्ट आइटरेशन में एरे का जो साइज होगा वो 50 हो जाएगा, उससे अगले आइटरेशन में एरे का साइज 25 हो जाएगा, उससे अगले आइटरेशन में एन का साइज 12 हो जाएगा, और इस तरीके से हम चलते जाएंगे जब तक हमारे पास वर्स्ट केस में फाइनली सिंगल एलिमेंट वाला एरे नहीं आ जाता। तो इस तरीके से तो हमारा जो इनपुट साइज है हर बार हाफ होता चला जाता है। अब यहां से लॉग का क्या कनेक्शन है? बाइनरी सर्च के अंदर लॉग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहां पे मैथ करना पड़ता है। मैथ के अंदर बेसिकली हम नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ सोचते हैं। ऊपर की तरफ सोचते हैं मतलब लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है 1, अब इसका साइज मुझे इंक्रीज करना है टू 100। तो बेसिकली 1 को क्या कर रहे हैं हम हर बार डबल कर रहे हैं। 1 को डबल किया तो 2 आ गया, 2 को डबल किया तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 को डबल करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को डबल करेंगे 16 आ जाएगा। तो बाइनरी सर्च में वैसे तो हाफ होता था, पर क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम वैल्यूज को डबल करते जाएंगे। तो हमें बेसिकली चाहिए कि 1 के साथ मैंने शुरुआत की और हर बार मैं इसे डबल कर रही हूँ। डबल करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना। तो बार बार इसे 2 से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब कितने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? लेट्स सपोज हमने इसे x टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया। x टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि 2 टू द पावर x हम ले आए। तो जब 1 को 2 टू द पावर x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए? फाइनल रिजल्ट हमारे पास 100 आना चाहिए। तो यहां से हमारे पास रिलेशन निकल के आता है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 100, और x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो मैथ के अंदर हम लॉग लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100 बेस 2। और यहाँ पे ये 100 क्या था? यहाँ पे ये 100 मेरे एरे का साइज था, यानी n था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग n। यहाँ पे बेस को इग्नोर कर देते हैं, x इज इक्वल टू लॉग n। और x क्या था? x मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे जो मुझे सारे ऑपरेशंस अपने बाइनरी सर्च के अंदर लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या निकल के आते हैं? x क्या है? x इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू लॉग n। तो यहाँ से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है बिग ऑफ लॉग n के इक्वल। तो बाइनरी सर्च में जब हम लॉग n लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि हर बार जब हमारा एरे का साइज हाफ होता चला जाएगा तो उस केस में क्या वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लॉग n। मतलब वर्स्ट केस में लॉग n नंबर ऑफ ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर रहे होंगे। अब वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करने के लिए इससे ज्यादा हमें लॉग का मैथ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना मैथ काफी है। तो अगर ये पार्ट भी आपको समझ में आया है तो मतलब लॉग हमें क्लियर है, इतना नॉलेज के साथ हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इस पार्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ा सा हम रिवाइंड करके लेक्चर ये पार्ट देख सकते हैं। बाकी ये जो कैलकुलेशन है ये जनरली इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पूछी जाती है। तो हम चाहें तो यहाँ पर याद भी रख सकते हैं कि हमारी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा log n होती है। इनफैक्ट अगर हम बैलेंस्ड BSTs की भी बात करते हैं, जब हमारे पास कोई बैलेंस्ड BST होता है, जब हम उनके अंदर भी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो वो भी हमारे पास log n के इक्वल निकल के आती है। अब ग्राफ्स के अंदर log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है? ग्राफ के अंदर जनरली log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ यहाँ निकल के आती है, मतलब दिस इज बिग ऑफ log n। और अगर हम कंपेयर करें लीनियर से बहुत ज़्यादा बेटर है हमारी log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, काफ़ी करीब होती है हमारी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो इसीलिए log n वाला कोड बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू अ लीनियर कोड। यानी अगर मैं लिखूं कि मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n के इक्वल है, दिस इज मच बेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ये बेटर का साइन है। दिस इज मच बेटर देन बिग ऑफ n। और वैसे ही अगर मैं लिखूं कि मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n के इक्वल है, दिस इज मच बेटर देन हैविंग अ कॉम्प्लेक्सिटी विच इज n स्क्वायर। तो ये वाला कोड बहुत बेटर होगा एंड ये वाला कोड भी बहुत बेटर होगा एज कंपेयर टू दीज कोड्स। अब नेक्स्ट जो कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है दैट इज n log n। n log n जनरली कहाँ दिखती है? जनरली हमें सॉर्टिंग के अंदर दिखती है। मैक्सिमम केसेस में जहां भी सॉर्टिंग हो रही होती है वहां n log n की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होती है। चाहे आप इनबिल्ट सॉर्ट को यूज करो, मतलब कई बार जावा के अंदर, C++ के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास सॉर्टिंग के ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उनकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यही अज्यूम करनी होती है। या अगर हम खुद से मर्ज सॉर्ट लिखें तो भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही निकल कर आएगी। उसके बाद एक और कॉमन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि यहाँ किसी ना किसी तरीके से, जनरली ये कहाँ देखने को मिलती है, जनरली ये रिकर्जन में देखने को मिलती है। जहाँ पे भी रिकर्जन हो रहा है और हमारे एक डिसीजन ट्री बनता है, जब भी रिकर्जन होता है एक डिसीजन ट्री बनता है कि हम अभी यहाँ पे खड़े थे, रिकर्जन में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। ये समझने के लिए हमें ऑलरेडी रिकर्जन आना चाहिए कोडिंग के अंदर। तो हमारे पास रिकर्जन है, रिकर्जन में लेट्स सपोज हम 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ से भी हम 2 डायरेक्शंस में जा सकते हैं, यहाँ से भी हम 2 डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तो रिकर्जन के अंदर एक नोड से जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस निकलती हैं वो तो हमारी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेस हो जाता है। बेस इज इक्वल टू ब्रांचेस, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 2 के इक्वल 2 ब्रांचेस। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल टाइम बेस इज ऑफ यहाँ पे भी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेटर होगा ऑफ n। और वैसे ही अगर मैं लिखूं कि मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n के इक्वल है, दिस इज मच बेटर देन हैविंग अ कॉम्प्लेक्सिटी विच इज n स्क्वायर। तो ये वाला कोड बहुत बेटर होगा एंड ये वाला कोड भी बहुत बेटर होगा एज कंपेयर टू दीज कोड्स। अब नेक्स्ट जो कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है दैट इज n log n। n log n जनरली कहाँ दिखती है, जनरली हमें सॉर्टिंग के अंदर दिखती है। मैक्सिमम केसेस में जहां भी सॉर्टिंग हो रही होती है वहां n log n की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होती है। चाहे आप इनबिल्ट सॉर्ट को यूज करो, मतलब कई बार जावा के अंदर, C++ के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास सॉर्टिंग के ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उनकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यही अज्यूम करनी होती है। या अगर हम खुद से मर्ज सॉर्ट लिखें तो भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही निकल कर आएगी। उसके बाद एक और कॉमन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि यहाँ किसी ना किसी तरीके से, जनरली ये कहाँ देखने को मिलती है, जनरली ये रिकर्जन में देखने को मिलती है। जहाँ पे भी रिकर्जन हो रहा है और हमारे एक डिसीजन ट्री बनता है, जब भी रिकर्जन होता है एक डिसीजन ट्री बनता है कि हम अभी यहाँ पे खड़े थे, रिकर्जन में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। ये समझने के लिए हमें ऑलरेडी रिकर्जन आना चाहिए कोडिंग के अंदर।